डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Namaste and very good morning, friends. Myself, Dr. Akhilesh Kumar Upadhyay, Assistant Professor, Department Journalism and Mass Communication, Humanities and Social Sciences, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University in the Chaitanya Studio. I very warm welcome to all of you. So, friends, today I will discuss to you the paper number 6. Digital media, social media and the immersive media, the unit number 12 in the first part, internet, radio and podcast, right? So, I will discuss to you what is the meaning between after the coming of the internet in the entire scenario or entire the like thinking of the people has changed. How to change upcoming the internet and how to take change place in the like the CD-ROM and DVD players. It can be placed on the internet radio and in same times the podcast displays of the FM radio as well as the radio webcast. So, friends, today I will discuss to you one by one of the internet, radio and the podcast, right? So, we will continue to lecture. So, today is the objective points. So, I will discuss to you the main agenda of this unit of the objectives. It means the first is the understand the origin of the spread internet radio and the podcast, how to spread the entire world and the connecting the globally connecting the word, right? And second, the learn the contributions Apple popularity and the podcast. It means the how to like learn the people one by one the internet and the like through the mobile applications and the internet after the coming in the entire scenario, and how to growing like the podcast, right? And again understand the podcast directories matters. What is the directories matters? So I'll discuss to you then learn aspects of the podcast productions, how to products, how to content creators and the how to team like podcast teams, like it may be work in the backside in the podcast. So I'll discuss to you. So the main theme or the main objectives of this unit, like you can see that this PPT, right? Again, after the completions of this units, you can you can see and you can get like these kinds of things. First is the difference between the internet, radio and podcast, first point, and followed by the understand the role of the early technology in the development and the online audio programming. And third is the really syndicate process. It means feed works are the fundamental features of the podcast like RSS, and again the learn aspect of the creating, editing and the distributing in the podcast scenario, right? So we'll continue the slide and again the topic, right? So here the you can see the introduction point. तो हम आपको बताएंगे, जैसे हमने बताया आपको कि लाइक किस तरीके से इंटरनेट की दुनिया में सारी चीज़ें आफ्टर कमिंग द इंटरनेट हैव द चेंज ऑफ ऑल सिनेरियो, राइट? कैसे एक बहुत ही सशक्त माध्यम बना पॉडकास्ट, और कैसे रेडियो के स्थान को इसने चेंज किया डिजिटली आ करके, या इसको हम समझेंगे। और मैक्सिमम ये हुआ आफ्टर द कमिंग द पॉडकास्ट लाइक द MP3 displays all MP3 like the CD and DVD players upcoming the internet and the tech place of the internet, right? वह स्थान इंटरनेट ले लिया। आज के करीब तकरीबन मेरे ख्याल से 15 साल पहले वह स्थान हुआ करता था CD DVD प्लेयर्स का, लेकिन जैसे ही इंटरनेट की दुनिया आई हम उससे एक रूबरू होना शुरू किए। और ये आप ये समझ लें कि
आपने देखा भी होगा कि आज के 15 साल पहले एक छोटा सा सबके हाथ में फ़ोन हुआ करता था, और उस फ़ोन से एक बात करने का एक माध्यम होता था। लेकिन जैसे ही फिर इंटरनेट का आया, फिर 2G, 3G, 4G, अब तो 5G, 6G की बात हम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ग्रोइंग हुआ, वैसे वैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी हर हाथ में एक मोबाइल होती चली गई। लिहाजा यह हुआ कि जो हम बैठ करके एक CD और MP3 हम लाते थे, उसको कनेक्ट करके हम उसे देखते थे, उसे चलाते थे, वह धीरे धीरे बदलता चला गया। और बदलने का कारण क्या था कि हम इस मोबाइल के ज़रिए या इस गैजेट्स के ज़रिए हम क्या करते थे कि कहीं भी हम ट्रैवलिंग करते हों, हम प्लेन में भी हों, तो हम पॉडकास्ट के ज़रिए कुछ चीज़ें लगा करके हम उसे सुन सकते थे, या डाउनलोड करके हम उसे बैठ के यात्रा में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी उसे हम कर सकते थे। और आपके एक मोबाइल जो एक यंत्र है, वही एक पर्याप्त माध्यम हो गया। अब इसके बनस्पत अगर इन द अपार्ट फ्रॉम द सिनेरियो यू कैन सी द लाइक MP3 and CD and DVD, so it take time, right? It's too much take time, right? Because of the particular time, like you can't carry in the anywhere, like CD players, like you can easily carry, but you can't carry the like all system like the DVD ROM and the connectivity of the monitors. It means monitor, it means the televisions. So that's why it is too much heavy. So that's why after the coming the internet, only simply gadgets you can carry in your pocket. उसको पॉकेट में रख कर आसानी से आप कैरी कर सकते थे, कर रहे हैं, और उसको आसानी से आप कर भी सकते हैं। तो यह जो कॉमन डिफरेंसेस आए, जिसकी वजह से MP3, CD और DVD धीरे 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 पूरी तरीके से एकदम गायब होता चला गया। आज मुझे लगता है कि वो जो प्लेयर है, MP3 और DVD CD प्लेयर्स है, यू कैन सी लाइक everywhere, like the throughout the peoples and the small child and the child like playing in like on the road and the ground, like the CBD and DVD players, right? But apart from that, you can you could see like in the past time, so very conscious people keep in the very safety this kinds of thing. But after the time the spread of the internet, he can take place the players and through the internet, right? अगेन जो इंटरनेट की दुनिया क्या है, एक सैटेलाइट के जरिए किसी चीज़ जो आप कनेक्ट जब करते हैं, तो किसी हर सैटेलाइट के जरिए कहीं पे आप बात के साथ साथ आपको इंटरनेट भी साथ साथ मिलने होता है। जो लाइव स्ट्रीम होने लगती है पॉडकास्ट, पहले हम क्या कि रेडियो के एक सुनने का माध्यम होता था, हम उससे चलते फिरते सुनने की रेडियो की व्यवस्था थी कि हम सारे काम सुनते सुनते हम कर पाते थे। एक हैबिट हुई, हम जैसे कि एक श्रव्य का माध्यम मानते थे। लेकिन जैसे ही दृश्य और श्रव्य दोनों शामिल हुआ, तो उसमें रेडियो की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और सुनने वालों की फ्रीक्वेंसी कम होती चली गई। जैसे एक वार्ता का संवाद होता था, एक्वायर्ड, उस टाइम्स जो ब्रॉडबैंड के जरिए कनेक्ट होता था, लोग सुनते थे, एक आदत सी थी। लेकिन जैसे ही पॉडकास्ट इंटरनेट के जरिए कनेक्ट हुआ, तो उस व्यक्ति को आप देखना शुरू कर दिए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मोर विजिबल जैसे हुआ इंटरनेट की दुनिया से आप जरिए वो जो पॉसिबल हुआ, तो आपके लिए ज़्यादा ही रुचिकर हो गया। इट इज़ द मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ यू कैन दैट टाइम्स यू कैन listen to persons, like any conversation of the persons. After that, through the possible of the internet connectivity, you can see you can listening and after as well as the seeing the people, right? दोनों आप एक साथ कर सकते हैं, मतलब कर आसानी से, you can easily can see and hearing the people, right? आप इसे सुन भी सकते हैं। हाँ, यह जो डिफरेंसेस आया, यह इंटरनेट के माध्यम से पॉसिबल हुआ। तो यह धीरे धीरे
या उसको आसानी से अब इस कैसे कि आप उसको किसी डिवाइस में, आपको डेस्कटॉप में, आईपॉड में आप उसे डाउनलोड करके आप उसे एक सेव कर लेते हैं, उसे सुनने के एक माध्यम बनाते हैं। अब सैटेलाइट के जरिए जैसे कनेक्ट होकर के वो जुड़ जाता है, वैसे आसानी से वो पॉसिबल होता चला गया, राइट। तो यह अंतर आया इंटरनेट के जरिए। तो कितना इंटरनेट एक तरीके से कि पॉसिबल जो हुआ और एक सकारात्मक बदलाव लाया लोगों के नज़रिए में, लोगों के सोच में, कि आप उसे जहाँ केवल सुनते थे आप देखना भी चालू कर दिए। यह जो डिफरेंसेस है, यह काफ़ी बड़ा डिफरेंसेस हुआ। अब अगर हम इसके मूलभूत इस पे संरचना पे जाएं, कॉन्सेप्ट पे जाएं, विचार पे जाएं, तो ये कैसे स्ट्रीम हुआ, तो अगर हम देखें कि द वेब रेडियो हैज़ कम द मीन द स्ट्रीमिंग द डिजिटल ऑडियो यूजिंग द वेब सर्वर। वही जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे ही वेब के जरिए कनेक्ट हुआ, उसने क्या किया कि एक रेडियो के आकार को बड़ा कर दिया। जहाँ हम ब्रॉडकास्ट के जरिए हम केवल उसे सुनते थे, उसे अब हम उसे देखते हैं, स्ट्रीमिंग रेडियो, ऑनलाइन रेडियो एक्सेट्रा। एंड द एन इम्पॉर्टेंट ingredient of the web radio is that they stream live against the digital platforms, letting the listening, download and the play audio files on demand. आप अपने इच्छानुसार, like on demand, you can download, you can play anywhere, not any foundations. When you like feel free, so that's you can connect the internet, like you open the video through the iPod or the laptop, and through the headphone, connect the headphone and easily listening to any audio video downloaded file, right? And you can easily sing like the hearing the people, right? Like listening the people. अब उसमें क्या है कि विदाउट डिस्टर्ब द अपार्ट फ्रॉम द पीपल, आप उसको सामने वाले को कोई ज़रूरत नहीं है आपको डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि सामने, क्योंकि आप हेडफोन जैसे कनेक्ट करते हैं तो केवल आप सुनते हैं, सामने क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, वो अपना कनेक्ट करके देख रहा है। यह रेडियो में पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब इंटरनेट से पॉडकास्ट के जरिए बहुत ईजिली में यह पॉसिबल हो गया। यह एक जो बदलाव आया, यह एक बड़ा बदलाव था। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो लाइव स्ट्रीमिंग का जो बदलाव आया, एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर हम जाएं, उस पर ध्यान दें, अगर जो मूलभूत संरचना पे, तो हम वहाँ पे क्या था कि एक समूह सुनने के एक माध्यम हुआ करता था, लेकिन आप इसे काफ़ी हद तक समूह भी पॉसिबल है, ग्रुप में भी आप सुन सकते हैं, और यह कहीं व्यक्तिगत रूप से भी इसे आप सुन सकते हैं। दिस इज़ द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द अपकमिंग द इंटरनेट। Through the internet, it is the possible of the, it is the more differentiable of the radio broadcast like the podcast through the possible of the internet, right? अब अदर हैंड इसे और क्या देखते हैं कि ऑडियो फाइल्स को आप क्या करते हैं, मोस्टली उसे डाउनलोड करके प्ले आप सुना सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन सुन सकते हैं, आप इसे ऑफलाइन सुन सकते हैं। ऑनलाइन इंटरनेट सपोज करो कि वहाँ ग्लिच कर रहा है, दैट समटाइम्स glitch the internet, technical glitch, right? So that's why before the technical glitch, like when you traveling anywhere, so that's why fluctuate the internet, fluctuate the data, right? So that's why before the journey you can easily download the file, and during the traveling you can open the file and listening and the seeing the video of the files of the people, right? Like जहाँ आपका इंटरेस्ट सर्व करता है उसको आप इजीली सुन सकते हैं। यह जो बदलाव आया, ये इसकी मूलभूत जो संरचना है, इसको आपको ऐसे आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें हम इसको हिस्ट्री ऑफ बात करें, रेडियो की बात करें, तो हम क्या करते हैं, पहले जब यह एक माध्यम जब आया, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हिस्ट्री ऑफ द रेडियो, हिस्ट्री ऑफ द टीवी, एक जब माध्यम जब आया तो उस समय उस तरीके से इसका एक प्रिंट का माध्यम से हम चीज़ें सुनना जब शुरू करते थे तो हम इंतज़ार करते थे। आपको याद होगा मित्रों की, विद्यार्थी मित्रों की,
हम एक दिन पहले साप्ताहिक मंथली तो हम एक चीज़ें काफ़ी लेट आती थी, उसके बाद जैसे ही ये आया आप करीब करीब बहुत क्लोज हो गए चीज़ों को। और फिर उसके बाद जैसे इंटरनेट आया मिनट टू मिनट चीज़ों को डेटा के ज़रिए आप उसे सुनना शुरू कर दिए। तो डेटा जर्नलिस्ट कैन act the intermediaries between the data audience by the simplifying the farmer to informer the later. This role makes them, as a Roger points out, the bridge between those in power of the produce and the hold the data and the public. This network was built on the virtual network called M-bone, SWAT and the multicast backbone, right? Earlier attempts were the experimental, then the commercials. Enterprises, the streaming, the radio pioneer grabbing stocks who worked with the Virgin Radio in 1995 took up challenge to take FM radio feed online. That time is the more important how to connect the upcoming the internet connect to FM through the internet. The more challengeable at the time of the 1995, right? He said in an interview, I brought at the $30 FM radio and the tuned in the Virgin Radio. Firstly, he started up the Virgin Radio and the plug in the headphone jack into the my desktop PC and they stream it out into the web. Like these systems, he can easily connect the desktop and the PC and the stream on the web through the internet. In fact, the history of the internet radio runs parallel with the technical development of the M-bone. And in the early days of the internet, concern about the bandwidth and consumptions and the abundant, right? This is the huge changes after the internet. In the 1990, as the sage of the Gavin stocks, that times the more challengeable of this task, right? Again, in 1996, things tuned around for the internet radio when the Virgin Radio made its the FM feed live on the internet, so the both its FM and online listeners hear the same program at the same times. This was the major development and could be the called the first complete online live radio moment in the history of the internet radio. Importance also say facts Virgin Radio was the first commercial radio to go online, right? This is the firstly and the Virgin Radio and the it's changed the commercial radio and go in the online. How it possible? It is possible only the connecting of the internet. If that times not available the internet, so that's why not connect with the satellites and not the go through the online, because of the lack of the internet it is not possible. So huge changes after the coming of the internet, right? Again, history of the podcast. What is the history of the podcast? You know, a podcast through the sounds are similar to the wave radio. It's similar wave radio because of the is difference in the sense of its being the periodic. What is the difference between the wave radio? It is the connecting through the desktop and the mobile, but it's a huge difference between like the podcast you can see the people and the same times voice, but in the vice versa you can't see in the people, only you can listening the voices when the broadcast and when the online of the wave radio. It is the major difference. जैसे वेब में क्या होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू आप उस मनुष्य को तो आप सुन सकते हो, जैसे रेडियो पर आप सुनते हो, लेकिन देखना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसे ही पॉडकास्ट में चेंज हुआ, वह देखना और सुनना दोनों ही पॉसिबल हो गया, वो भी ऑन डिमांड, राइट? द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द ऑडियो फाइल्स टू यूजर thus the becomes the difference between the web radio and the podcast. Even the when they connect in the both them can be the same. An episodic nature of the podcasting set at the apart from web radio as well. The episodic nature was the made possible through the concept of the RSS feed, right? And the whose first specifications called RSS 0.9 were published by the two Netscape employee, then the Libly
and the Ramanathan B. Guha in the 1999. Right? This is the history of the podcast. And again, you can see the continue. This sets apart the availability, the building block, the podcasting, web radio by the 6 years of the how RSS 0.9 was still ready to include media files. In 2000, the work the French entrepreneur Trishan Louis, then American developer Dev Daven enriched the RSS standard further than include audio video files. What is the meaning of the RSS? It means the really simply syndications. It means easily connecting the systems, right? Standard further than include audio and the video files. It is the more simply process. It like the connecting the all devices, right? Published the RSS 0.92, and this set stage the development of the podcasting. Within a year, by October 2001, we had the first iPod, which took the music world by the storm. By the 2004, we had the term podcast as noted above, right? And again, what is the podcast and cloud? So since Apple played such a big role in the developments, अब इसमें क्या रोल प्ले करता है कि जो पॉडकास्ट सेक्टर्स है इसमें उसके बिहेवियर को, उसका जो मूल स्वभाव है उसमें उसको क्या करता है, उसको एक नया अप्रोच देता है, उसको सोच करके उस इंडस्ट्री में उसमें एक नया चेंज लाता है. द आइकॉनिक एप्पल को फाउंडर है द CEO स्टीव जॉब्स डिड नॉट बिलीव दिस सब्सक्रिप्शंस म्यूजिक एंड पॉडकास्ट. वो इस पर बिलीव नहीं करते, लेकिन ही फेमसली रिमार्क्ड इन एन इंटरव्यू टू द रोलिंग स्टोन मैगजीन इन 2003. वह पहले क्या इसमें विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो 2003 में इस मैगजीन को इंटरव्यू दे करके इसको स्वीकार करते हैं. टोल्ड दैट द म्यूजिक सब्सक्रिप्शन सर्विसेज दे वर द पुशिंग वेयर द गोइंग टू फेल. सो म्यूजिक नेट वाज गोना फेल, प्रेसली वाज गोना फेल. Here why people don't want to buy their music as subscriptions, right? They brought 45, then they brought LP, they brought the cassettes, they brought the 8 tracks, then brought the CDs. They are going to want to buy downloads. There is another class of the podcasting platform that the reader should carefully look at. They are called podcast hosting service, which then includes popular players like the Podbean, Buzz Sports, Blustery, etc. These are platforms crucially playing up this continuous podcast. These platforms act like any other the web hosting service with the focus on the podcasting and the audio streaming. One can also them as the connect delivery networks and the popular AWS, which allow administrators to host media files separately from the regular web content and the faster delivery. It is the more separations through the webcast radio and the podcast clouding, right? Again, another features of distinguishes a podcast hosting service from the audio distribution platform is the allow publication of RSS feed for the podcast. यह आसानी से जोड़ता है उस वास्तविकता को दिखाने की एक तरीके से आरएसएस के माध्यम सिंपली सिंडिकेशन. कैसे? जैसे कि एक चैन जैसे बनाते हैं हम, एक दूसरे से कनेक्ट करता है. जैसे हम अब एक पेन हमारी है तो एक पूरी तरीके से इसमें कनेक्टिविटी आप इसमें देख सकते हैं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे चैन का माध्यम होता है कि जैसे एक यहाँ भाग है, यहाँ से एक दूसरा जुड़ा हुआ, फिर तीसरा जुड़ा हुआ, फिर चौथा जुड़ा हुआ, ऐसे जुड़ के एक दूसरे से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से फिर सैटेलाइट्स के माध्यम से वो कनेक्ट आसानी से करता है. जोड़ने के एक माध्यम होता है. तो लिसनर्स फेवराइट फीड द रीडर्स आर द प्लेयर्स. जो लिसनर होता है, जो आप सुनते हैं, वो अपने फेवराइट जो सुनता है, कंटेंट सुनता है, उसके अकॉर्डिंगली वह क्या करता है, अपना फीडबैक देता है और उसी हिसाब से वह डिवाइस को वह डाउनलोड करता है. अभी तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं पॉडकास्ट के, जैसे अभी एक कुकू FM का खूब चल रहा है
कि कुकू एफएम में बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप उसको इंग्लिश में सुन सकते हैं, आप उसको हिंदी में सुन सकते हैं, कई भाषाओं में वो कहानी अवेलेबल है। तो उसको बड़े ईजी वे में आप सुन सकते हैं, कहीं यात्रा करते समय उसको सुन सकते हैं। तो वह काफ़ी चीज़ें आसान बना दिया है कि आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो पॉडकास्ट के ज़रिए सुन सकते हैं, आप उसको किसी और दूसरी चीज़ में है तो वह वेब के ज़रिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, आप उससे अच्छे तरीके से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स कुछ आपके लिए भाग 1 में जो क्वेश्चंस दिए हैं, तो यहाँ पे ओनली 2 क्वेश्चंस हैं। जो पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन से हाउ डिड पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग स्टार्ट, या कैसे स्टार्ट होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आप समझिए। और इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आप जो टेक्स्ट बुक है उसको आप सहारा लें और पढ़ेंगे तो और चीज़ें आपके साथ बेहतर हो जाएंगी। दूसरा, एक्सप्लेन रेडियो द वेब स्ट्रीमिंग, तो ये वेब स्ट्रीमिंग के जरिए कैसे रेडियो वह स्ट्रीमिंग होती है उसको वह पढ़िए। वंस अगेन आई से टू यू, प्लीज़ रीड द टेक्स्ट बुक। आफ्टर द watching the video, you can read the textbooks, you can easily understand how to streaming, what is the meaning and significance of the internet and radio podcasts, and you can easily understand. So again I will meet to you the next part of this unit, unit number 12. Thus I will discuss again another segment of this lectures, this unit. So I will discuss to you. तब तक के लिए नमस्कार। पुनः हम आपसे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में विल मीट टू यू अगेन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट, एंड विल डिस्कस टू यू इन द नेक्स्ट segment of the internet and radio podcast, the paper number 6, unit number 12, part 2. So तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार। और आप टेक्स्ट बुक पढ़िए और इस वीडियो को आपने देखा, नमस्कार। स्वाध्यायः